Ma'am, can I audible? Am I audible? Yes, Nirbhay, you are audible. Okay, thank you, sir. Uh, Sir, भास्कर सर ने ज्वाइन नहीं किया अभी। हेलो। Yes, he will join just in few minutes. Yeah, okay, sir. Sir, can you please make the co-host Hasti?
To whom? Whom should I make a host? Hasti Chandresha, co-host. Good afternoon, everyone. Bhaskar sir is here with us. We'll start this meeting shortly in 2 minutes. I'd like to request all the SAC head members to kindly ask their coordinates to join. Thank you. हस्ती क्या हम वीडियो ऑन कर सकते हैं जिस टॉपिक पे हमारा आज का सेशन है Sure, sir. एक फ्री वीडियो सर एक इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग स्टार्ट कर लें इफ यू से यस 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 ओके ओके श्योर सर हाँ So- जिसमें मैं आपको बताना भूल गया। या ओके श्योर Good afternoon, everyone. So now I think everyone has joined and more people are joining. So without further ado, let us start the meeting. Spirituality and knowledge are sacred symbols of the best human experience in this universe. And today we have one such personality with us on the occasion of World Environment Day, who has achieved a lot more than just degrees and profession. On behalf of SAGE Student Activity Cell, I, Hasti Chandresa, SAG Documentation Head, heartily welcome Mr. Bhaskar Singh Parihar to SAG Fest Talk. We are honored to have you here, sir. Before you all listen to his golden words, I would like to share about his work and very briefly what this webinar is going to be about. Mr. Bhaskar Singh Parihar sir has completed his BA LLB honors from the School of Law, DAVV Indore. He has also done certification course from Harvard School Law USA and WIPO Geneva. He is an advocate at MP High Court Indore bench and is currently serving full time at ISKCON. And today we'll be hearing about the facts of World Environment Day and one of the biggest problems, plastic, and also how ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, lends a helping hand to prevent the harm. So without the further ado, let's start the meeting. So please, you can start with the video now. Thank you so much. I am very thankful to SAGE University for inviting me to this session on World
Environment Day. So can we proceed or we can wait for some time, as you say? No, sir, please, you can proceed. Okay. So I'm just sharing my screen. So whether my screen is visual? Yes, sir, it's visible. So if participants want, they can on their video so that I can see them. All are there. Okay, so today we are having the World Environment Day, and the topic of today's program is Turn the Tide, Save the Planet. So it's very rare topic, and no, I might not be aware what is the meaning it. So at the end of जब हमारा लेक्चर खत्म होगा तब तक हमें समझ जाएंगे कि ये टॉपिक क्यों है. So वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से याद है, तो हम इसका पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे. सबसे पहले हिस्ट्री अगर देखा है तो 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में. वेल माय वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. ओके, थैंक यू. सो स्वीडन में ये यूएन का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में. तो उस समय पर ये इन्वायरमेंट का पहला कॉन्फ्रेंस था. उसके बाद फिर रियो में, जो कि 1992 में अर्थ समिट नाम से हुआ था. सो उसका बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, और फिर अभी 21st सेंचुरी में भी काफी कुछ हुआ है. सो उस समय जो 1972 में जो कॉन्फ्रेंस था, ये स्टॉकहोम का स्टॉकहोम डिक्लेरेशन नाम से जाना जाता है. इसमें अराउंड 109 सेशंस थे और 26 आर्टिकल्स थे. सो इसमें पूरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि तभी से मतलब अराउंड 50 ईयर्स हो चुका है, तब से इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम शुरू हो चुका था. उसके पहले कोई भी इन्वायरमेंट का मेजर इशू नहीं था हमारे इंडिया में, ना कि इवन वर्ल्ड. सो इसमें जो एक्शंस प्लान्स हुए उसके अकॉर्डिंग में 1974 में पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया. सो उसका थीम था ओनली द प्लैनेट अर्थ. सो इंडिया का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो ईयर 2011 में न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि इंडिया ने होस्ट किया था. सो प्रेजेंट जो 2021 का जो इन्वायरमेंट डे है, इसको पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं. और जो कि इस बार पेंडेमिक कारण कुछ भी ऑफलाइन इवेंट नहीं हो पा रहे हैं, पूरे इवेंट ऑनलाइन हुए हैं. और साथ ही साथ बहुत सारे जो ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है इसका मेन थीम है, और बहुत सारे सब थीम्स हैं किस तरह से इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाएगा. और साथ ही साथ एक 10 साल का एक प्लान बनाया गया है कि हम आने वाले 10 साल में यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या किया जाएगा, जिसके तहत इकोसिस्टम जो है रिस्टोर हो सके. सो पूरा जो थीम है, इससे ऐसा समझ में आता है कि मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट हो चुकी हैं, जो कि अल्टीमेटली हम सभी के द्वारा ही क्रिएट किया गया है. मे भी हो सकता है कुछ कंट्रीज में ज्यादा कंट्रीब्यूटर हो, कुछ कम हो. इस डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पर और कंट्रीज पर. ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन क्रिएट किया गया है, अर्थ को ज्यादा हार्म किया गया है. और जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर उतना, या कहें ये सीधे से कहें हम कि ये फैसिलिटी ही नहीं है कि हम एनवायरनमेंट को हार्म कर सकें. सो ये एक मतलब 2021 से 2030 तक का एक प्लान बनाया गया है यूएन का, एक छोटा सा एक मेट्रो विधि. Am I audible? Yes, sir. Whether everybody can wait for just 2 minutes. I had to join from another internet connection this school. So I'm again logging in just 2 minutes.
sir will be joining us back in 2 minutes. Okay, I'm again sharing my screen. Sir, is there any problem? I can share the screen also. No problem. Actually, I joined from another internet connection. Okay, Now it's fine. no issue. Thank you. It may be visualized. Okay. So these are the plans which are made for 10 years by United Nations for the ecosystem restoration. So इसके थ्रू आगे कैसे इकोसिस्टम रिस्टोर करना है, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतना ज़्यादा है इन्वायरमेंट में, क्योंकि उनके में अब ये नहीं है कि हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं. वी हैव टू इम्प्रूव दिस द सिचुएशन. आई डोंट नो व्हेन स्टक और So these are the problems which we are facing at present. The whole world is facing. So ये जितना पूरा problems हैं, या pollution, soil degradation, global warming, overpopulation, and many others, there is a list of 20 problems like this. So we all are facing, and the whole world is facing like this only. So जितना भी हम देखें पूरा इसमें जितने भी problems हम देख रहे हैं एक तरफ से, सब ज़्यादातर 10 साल, 20 साल, 50 साल या ज़्यादा 100 साल में शुरू हुआ है. उसके पहले प्रॉब्लम्स नहीं. ये सब प्रॉब्लम्स हम ही लोग ने, ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है. और अब अगर हम ये प्लास्टिक का कंजम्पशन देखा जाए पूरे वर्ल्ड का ही है, तो 1950 तक जीरो कंजम्पशन और 2001 में कंजम्पशन इज 322 मिलियन टन्स. इंडियन सिस्टम अगर देखा है तो इट मे बी अराउंड 32 करोड़ समथिंग लाइक दैट. 32 करोड़ टन्स इज अ ह्यूज अमाउंट. और इंडिया में अगर देखें तो इवन 1996 तक ऑलमोस्ट जीरो कंजम्पशन दिख रहा है, और सीधा 2017 में अराउंड this is 80 million tons, so something around 1.8 crores. So इतना प्लास्टिक जो है, और ये ज्यादातर प्रॉब्लम है सिंगल यूज प्लास्टिक का. सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसके कारण से पूरा वर्ल्ड को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है पूरा, क्योंकि एक बार हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं, फिर उसके बाद और कुछ उसका यूज नहीं रहता. रिसाइकल होने में उसे अलग अलग चीजों में अलग अलग समय लगता है. कैन के लिए कुछ लिमिटेड टाइम है, बॉटल्स के लिए और ज्यादा टाइम लगता है. सो अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम लेती हैं. और जितना नेचुरल रिसोर्सेज, जितना कुछ है, जितना कुछ नेचर में वेस्ट प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल पीलिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेनी अदर थिंग्स, सो उसका एक टाइम है, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाएगा. बट प्लास्टिक वी डोंट नो हाउ मच इट टेक. सो दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच ओशन इज फेसिंग. 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक, और हर साल 8 मिलियन प्लास्टिक और उसमें डंप किया जा रहा है. हर साल यही प्रॉब्लम बार बार बढ़ता जा रहा है. पूरा जो आगे हम देखेंगे किस तरह से प्रॉब्लम जो है प्लास्टिक का ओशन में क्रिएट हो रहा है. सो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज मींस इवन अराउंड 10 lakhs इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है पूरा सिर्फ प्लास्टिक कारण हो रहा है. प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक कैन्स, प्लास्टिक पेपर्स, अलग अलग चीजें जो हैं. और प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो सी में जाता है तो वहाँ के जो वहाँ के जो एक्वेटिक्स हैं उनके द्वारा ये इनहेल कर लिया, इनहेल नॉट इन, वो खा लेते हैं और फिर उनके स्टमक में जाता है. और 80% तक ये जो ऑर्गेनिज्म अगर कोई भी खाएगा, फॉर एग्जांपल इवन अ ह्यूमन बीइंग, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनी इंडिविजुअल. सो एक्वेटिक्स में भी यही होता है, थोड़ा सा प्लास्टिक अगर खाए तो सीधे डेथ हो सकता है. और किस तरह से प्लास्टिक जो है अफेक्ट कर रहा है मैराइन लाइफ को. सो मैं वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो जो मैंने दिया था वो शेयर कर सकते हैं. थोड़ा सा हॉरिबल वीडियो है, आई एम वेरी सॉरी, बट ये सच्चाई है. मैंने कोई वीडियो अपने से नहीं बनाया है, कहीं फेक सोर्स से नहीं, यूएन से लिया गया है. तो आप लोग प्लीज देखिए.
Shearwaters are incredible birds. They migrate thousands of miles, stopping only here to breed. Yeah, the stomach is very, very full, and if we look here, there's some very dark pieces, some very light white pieces, and if you see, you know, as I push on this, it's absolutely rigid, completely full of plastic all the way up. Oh, look at that. Absolutely no doubt that this bird died as a Stuffed full result of of that plastic. That is literally a gut full of plastic. It's quite alarming, isn't it? Oh, that's awful. Range of plastic types and colours. We've got everything from the blues and the reds His to the stomach's just filled with it. Big pieces too. big Like sharp heavy. pieces. Oh wow, look at the size of that big black piece. That is an enormous piece of plastic. Unbelievable. Look at the size of that. Jen, I counted 234 pieces of plastic out of that one bird. Is that a record? Not even close, unfortunately. So for this species, the record is 276 pieces of plastic inside of one 90-day-old chick. And that plastic, when we weighed it out, accounted for 15% of that bird's body mass. So that's a pretty scary statistic. If we translate that into human terms, it gets even worse. That would be equivalent to you and I having somewhere around 6 or 8 kilos of plastic inside of your stomach. It's equivalent to about 12 pizzas worth of food inside of your stomach. It's quite a bit of plastic for just one little bird. The parents were trying to do the right thing. There's a lot of squid beaks in here, and this purple colour is evidence of the squid ink. It's just a shame that every now and then they got it wrong, and got it wrong in a bad way. Really is quite an overwhelming thing. I do have some pretty rough days, have to go home and really wrap my mind around where do we go from here. As a Pacific Islander, I know that the ocean is in deep trouble. The very authoritative prediction shows that by the year 2050, there'll be as much plastic as there is fish in the ocean by weight. Every country uses plastic. We need to start rationalizing that. We need to think about reuse of plastic, single-use plastic. It's got to be on its way out. And you know, plastic shopping bags are a good example of that. Your family does not need to use them. Take a cloth bag with you when you go shopping and put your shopping in there. There's an equivalent of a large garbage truck every minute of every day backing up to the ocean and just dumping plastic into it. We really have to look at ourselves and say, do we deserve this beautiful ocean that was given to us? Okay, so
इस वीडियो में हम देखें किस तरीके से मैराइन लाइफ जो है उसको प्लास्टिक अफेक्ट कर रहा है। तो जैसे कि पहले वो वर्ड का दिखाया गया, तो उसमें वो जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो उसके अंदर जितने प्लास्टिक के पीसेस निकले हैं अराउंड 234, उनको जो उन्होंने मेजर किया तो जितना वेट उस बर्ड का है और उस प्लास्टिक का है वो अराउंड 1/6, तो आई थिंक 1/6 हो रहा था। मतलब ह्यूमन बीइंग के देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति 7-8 किलो प्लास्टिक अगर कंज्यूम कर लेता है तो फिर क्या हालत होगा। मतलब ह्यूमन बीइंग एक बार जितना फुल डाइट अगर लेता है, तो किसी का डाइट अगर बहुत ज्यादा है तो अराउंड 1 kg होता है मैक्स टू मैक्स। बहुत ज्यादा कोई बहुत खाने वाला है तो 1.5 किलो एक बार उसका डाइट होता है। पर ये इनके पेट से 8 किलो, मतलब ह्यूमन बीइंग के अगर पेट से 8 किलो अगर निकले, फिर समझ सकते हैं मतलब कितना खराब स्थिति हो जाएगा हमारा। और ये बहुत सारे एक्वेटिक्स हैं उनका हो रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो, क्योंकि हमारा जितना वेस्ट है सब कुछ वहीं जा रहा है, सब कुछ समुद्र में ही जा रहा है। अल्टीमेटली हमारे पास कोई और तरीका नहीं है उसको करने का, क्योंकि प्लास्टिक एक बार हमने जो यूज किया है उसे हम थ्रो कर देते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो इसी तरीके का लाइफस्टाइल बना हुआ है, इस तरीके से कुछ बन रहा हुआ। सो अब उसके बाद हम देखते हैं कि जितना भी पूरा प्रॉब्लम्स है, हम अब आज तक हमें कोई ऐसा स्पीसी इस अर्थ पर नहीं मिला है जो कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। कुछ ही स्पीसीज हैं जो हमें मार सकते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब स्नेक कैन किल अस, टाइगर कैन किल अस, मैनी अदर स्पीसीज कैन किल अस, बट वो बहुत ही स्मॉल पीपल जो है उनको हार्म हो पाता है। ज्यादातर किसी को कोई बहुत बड़ा हार्म नहीं होता उनसे, पर ह्यूमन बींग्स जो है हम उनको बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं। सो ह्यूमन बींग जो है वो बहुत ज्यादा थ्रेट है प्लेनेट अर्थ पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ह्यूमन बींग एक थ्रेट हो रहा है? कोई एनिमल्स क्यों थ्रेट नहीं हो रहे? क्योंकि है ये कि एनिमल्स का जो पूरा लाइफस्टाइल है, पूरा जो उनका जीवन है, वो एक ऑलमाइटी द्वारा फिक्स किया गया है। कोई एनिमल का ऐसा है कि वो ग्रास खाता है तो ग्रास ही खाएगा, वो और कुछ दूसरा अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा वो, अगर हम ह्यूमंस उसको बहुत इंटरफेयर करते हैं तभी वो थोड़ा चेंज होता है, तो ही उसमें बहुत चेंज करना मुश्किल हो पाता है। पर हमने अपना जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो तरीका है, वो हमने पूरी तरीके से बदल रहे हैं। प्रिमिटिव एज में देखा है तो बहुत सारे दूसरे तरीके थे, अभी दूसरी चीजें हो गई। हाँ, ये हो सकता है जरूरी हो, पर कहाँ कितना सब तक है। हम नेचर को हार्म करके इस कॉस्ट में तो हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपना प्रॉस्पेरिटी ये नहीं कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें इंडियन कल्चर में, तो किस तरह से मतलब इन्वायरमेंट का जो था रिस्पेक्ट होता है। हम ज्यादातर सोचते थे कि हमारे मतलब जो पूर्वज हैं पेड़ों का पूजा करते थे, और साथ ही साथ हमें हमेशा बोला था मदर अर्थ, मदर रिवर, होली गंजेस, हमेशा जो अर्थ है मतलब धरती माँ, हमेशा बोला जाता था। मतलब हम जितना सराउंडिंग्स है सभी को मतलब एक तरह से वर्शिप करते थे। तो ये जो कल्चर था इंडिया का प्रिमिटिव एज में, तो उस समय पर इन सब चीजों को इतना ज्यादा वैल्यू दिया जाता था कि उन्हें बिल्कुल वर्शिप किया जाता था। पर धीरे धीरे उसका जैसे हम एक्सप्लॉइटेशन करने लगे। सो आगे हम देखें क्या रीजंस है, मेन कॉजेस क्या है इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन में। क्योंकि जितना हमने पहले शुरुआत में 20 कारण देखे थे कि इन कारण से आज ये रीजन है जिसके लिए इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। पर जो उसका मेन कॉज है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, क्यों हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, वो हम आगे देखें क्या रीजन है। सो ये जो रूट कॉज है कि पॉल्यूशन जो है हमारे हार्ट में, इकोलॉजी में जो बाहर पॉल्यूशन है उसका बस एक रिफ्लेक्शन, जो ग्रीड है हमारे अंदर, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, फॉल्स ईगो है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये मेजर प्रॉब्लम्स है जो कि हमारे अंदर है, और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो बाहर दिखता है। और ये सब सॉल्यूशन तब होगा अगर सॉल्यूशन हम अपने अंदर करते हैं। अंदर सॉल्यूशन होगा तो उसका रिफ्लेक्शन जो बाहर होगा उस प्रोपोर्शन में बाहर सॉल्यूशन जो होगा वो हो पाएगा। और साथ साथ अगर हम बाहर जो सॉल्यूशन करते हैं वो अगर इनर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो फिर वो बहुत ज्यादा देर तक हो नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा अगर ब्लड प्योर नहीं है तो कई बार हमारे शरीर में बॉइल्स होते हैं, सो वी हैव टू क्योर बॉइल्स आल्सो एज वेल एज वी हैव टू प्यूरिफाई आवर ब्लड आल्सो, बिकॉज इफ ब्लड इज नॉट प्यूरिफाइड देन ओनली बाय ट्रीटिंग द बॉइल्स it will appear here, then another way, then another way, anyhow it will appear in our body. So first, apart from treating the boil, we have to also cure our blood also. So environment जो है हमें क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. We have to take measures how to deal with it, but similarly we have to clean ourselves from the inner. So how ये जो हम तीन चीजें देख रहे हैं, greed, self control, false ego, so how these are affected. So every human being has certain amount of needs, so it may different in different individuals. Some individual may have a large amount of need because of their psychophysical nature, because of their upbringing. But what happens because of not being attentive, what happens, it turns large amount of need. So there is a famous saying from
from our father of nation, you can say. There is enough in this planet for everyone's need, but not for anyone's greed. Means even a एक्सक्यूज मी सर, आपका थोड़ा अटक रहा है वीडियो और वॉइस भी. won't be able to satisfy even if the whole natural resources are used. For example, if we see, oh, just a minute. अभी सही है क्या? Yes sir. Now you are. Okay. So what I was saying. This is verse 1 of Ishopnishad. It says, Ishavashyam idam sarvam yat kincha jagatyam jagatena taktena bhunjita magrandha kashtisudethanam. So it says that whatever animate or inanimate things which are there in this planet, whether living or non-living things, so they are controlled and owned by the Lord, whether they are living things or even non-living things. And one should accept only those things which are at most necessary for himself, and rest he should leave for other individuals. And one should not keep other things, one should not accept other things. We should understand that these things are not belong to us. Whatever is required for us, that's enough for us. We should not be very much greedy to enjoy more and more and more and to accumulate more and more. For example, if we keep a bunch of grain, a whole sack of grain outside, then a bird will come and take a few grains away, but a human being will come and keep the whole thing away. Doubtlessly, it's not wrong to keep the proper storage with us. We are human beings. We have more rational thinking, but by exploiting other individuals, it's not at all good. Like, for example, we feel that even 50 years ago or 100 years ago, our country is very much poor, but oftentimes we had experienced that our country is called as Sone ki Chidiya or Golden Bird, because and we see many, like around 1000 AD or it's around 1100 AD. So many Muslim rulers have invaded in India for invading our country. So they had taken a large amount of gold. So इससे हमको समझ में आता है कि हमारे पास कितना सारा पहले चीजें थी, और हमारा कंट्री ऐसे नहीं था कि गरीब था, और साथ ही साथ जो बीच में इतने सारे इन्वेशंस हुए. सो इसके कारण से, और खासकर अभी बहुत सारी और दूसरी प्रॉब्लम्स है. If we go on that will become another topic. So be here. So another thing is false ego, that is misidentifying ourselves. We misidentify ourselves and feels that we are the master. We have all the right to enjoy, even to the term of exploiting the natural resources. We have our limit, we have our restrictions, but we are not limiting to that. Now another is self-control. So we can very well see what this person is facing. One side is green diet, and another side is some junk food. So what happens? We know that this junk food is not good for us, but this green diet is very much healthy. But because of our lack of sense control, what happens? We means involuntarily, we can say that we fall into that food only. पूरा हम सोचते हैं कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, हमको पता है कि कुछ वो सब चीजें अच्छा नहीं, पता नहीं, मतलब जितने मतलब पैकेज्ड फूड हैं कुछ भी देखें तो वो उसको अगर आप पलट कर देखें तो, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली ये रूल है कि आप कुछ भी चीज को कुछ भी बता के बेच सकते हैं. मतलब आप इन आयुर्वेदिक चीज कुछ नहीं है उसको आयुर्वेदिक बता सकते हैं, बस आपको इंग्रेडिएंट में लिखना पड़ेगा उसका पूरा जितना कुछ. तो इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखते हैं तो अब टोमेटो केचप का इंग्रेडिएंट देखें तो उसमें टोमेटो कहीं है ही नहीं. Has the max to max 40%. Even some of the famous brands are not providing us more than 40% tomato in tomato ketchup, and rest are the chemicals and many other things are there which we will discuss it. It's too much. So, but what happens because of our lack of self-control, we end up eating that only. And this is all about eating. So another thing, many other things are there. We are using various other things, and the nature is exploited. This need is another thing. And greed is another, which we had already discussed. Need अलग है. अगर हम सिर्फ need के लिए लें तो उतना exploitation नहीं होगा. Like for example, we are using this smartphones, we are using this laptop, but we all know that this whole internet, this whole system means how much it is misused. I don't want to discuss too much about here, but most of the data in internet is used for wrong things. Even I'm not quite sure about this, but
even more than 90 to 95% is used strongly. So the problem is not we are using all these modern gadgets, but the problem lies here in mismanagement. We are misutilizing it, and this is a whole problem. So what are the real solutions for all these problems which I had discussed? So first of all, we have to understand our mother nature. We don't have to treat it as a non-living entity. Our ancient system, our philosophy don't say like this. Our our nature is considered as mother. So then another thing is we have to clean our inner self. As I had already told, whatever the inner cleaning is done, the outer will be just a reflection of it. So अगर हमारे अंदर impurities हैं, अगर हम heart में clean नहीं है, अगर हमारे अंदर ये जो क्या बोलते हैं false ego, अगर lack of sense control है, तो हम automatically nature को exploit कर देंगे. It's not at all possible. Means कितना भी अगर हम प्रयास करें, हम उसमें मतलब फॉल्ट होगा ही हमारा, किसी भी तरीके से हम नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे. देन अनदर थिंग इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड. हम कई बार ये टॉपिक सुनते हैं, सॉरी, दिस यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, कि वी हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एज आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एज आवर फैमिली मेंबर्स. बट हाउ मच डिफिकल्ट इट इज. लाइक even a smallest thing happens to us or to our family members, we just become too much rigid. But people are suffering outside. We don't worry about it. What's the reason? Because we don't feel an universal brotherhood, and it's just not. अगर हम सिर्फ ये बोलें तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. First we have to understand the philosophy of spirituality. जब हम समझेंगे कि each and every individual has its connection with the Almighty, then we will understand कि even like there is one verse in the Bhagavad Gita. The translation of that verse is a sober person sees a human being, a cow, a dog, an elephant, and every other living entity as equal. Now, according to circumstances, जैसा होगा उस तरह हमको treat करना पड़ेगा. But we have to understand कि the same soul which is there in the human being, it is there in every living entity, in every creature, whether it's aquatics, whether it's microorganisms, whether it's animals, whether it's bird. So when we will understand that concept of universal fatherhood, then we will understand this universal brotherhood, because lack of that is the real problem which are facing. Each and every problem in the present world is because of their lack of spirituality, and it's just a reflection of it. Another thing is we have to live in harmony. We have, as we had discussed earlier, we don't have to overutilize our resources. We have to use it whatever is provided to us. हम अगर पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने जाएंगे तो फिर दूसरे लोगों को चीजें नहीं मिलती. और फिर जो एक कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि चीजों को हम अभी इस्तेमाल करें और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल हो पाए, वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता. हम खुद भी सही से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और साथ ही साथ वो दूसरे आगे के लिए उस सही तरीके से रह नहीं पाता. ईयर बाय ईयर अगर देखें कि पिछले मतलब कि 50 इयर्स पहले जाएं और अभी का देखें, तो मतलब मेजर डिफरेंस है पूरा एनवायरनमेंट में, पूरा इकोसिस्टम में. मींस इवन इफ यू ट्रैवल टू अ बिग सिटी टू स्मॉल टाउन इन इंडिया आल्सो, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई यूज्ड टू गो माय होम इज स्मॉल टाउन, हियर आई एम लिविंग एट इंदौर. So what happens, there are huge differences there. Like for example, when we used to stay, every time just vehicle outside, मतलब पूरा गाड़ियों के अलावा कुछ आवाज नहीं आता. वहाँ छोटी जगहों पर हम जाएं तो पूरा मतलब एक अलग शांति महसूस होता है, क्योंकि उतना ज्यादा क्राउडेड प्लेस नहीं, उतना पॉल्यूटेड नहीं. और जो अर्बनाइजेशन जो प्रॉब्लम है लोगों का बड़ी सिटीज में जाना, तो वन ऑफ द मेजर रीजन इसका ये है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस मिले, उनको ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने को मिले. बड़े शहरों में जाएंगे, वहाँ ज्यादा चीजें फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल होंगी, ज्यादा हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. और साथ ही इससे प्रॉब्लम होता है कि बड़े शहरों में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, और फिर जितना भी पूरा प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का हो, ओवर क्राउडिंग का हो, सब कुछ उसी कारण हो सकता है. सो प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट वांट टू लिव इन हार्मोनी. द people who are living in village, they don't want to stay there and enjoy their life in their habitat. So this is also one of the problems. Real happiness in true consciousness. So when we understand what is our true nature, so we will get the real happiness. Like for example, if you take the जब हम देखते हैं कि यहाँ शहरों में मीन्स some of the कुछ बच्चों को हम देखें कि उनके पास इतना सब कुछ फैसिलिटीज है,
छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने टॉयज हैं कि पूरा कमरा बिल्कुल टॉय से भरा हुआ है। और गांव में जाकर देखें, वहाँ बच्चों के पास कुछ भी नहीं, वो एक साइकिल का पुराना टायर ले लेते हैं, पूरे गांव में उसी के साथ में घूमते रहते हैं, पूरे गांव में बस उनके पास वही प्ले टॉय है। और बचपन में शायद हम लोग ने किसी ने ऐसा किया होगा, क्योंकि हम लोग 20 साल पहले छोटे थे, तो उस समय पर हम लोगों ने हो सकता है ऐसा किया हो। तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मतलब पीपल आर हैप्पी। इट्स नॉट रॉन्ग, मतलब ये बिल्कुल गलत नहीं है कि हमारे पास चीजें हैं सो वी आर रॉन्ग, बट we have to understand that these are not going to bring any real happiness. The persons, even some people are there who don't have anything, then also they are happy. And there are some people who have everything, but then also they are not happy. In our scriptures, हम शास्त्रों में देखें तो वो श्रीमद् भागवतम में हिरण्यकश्यप का एक एग्जांपल मिलता है। इतना ज्यादा उसके पास मटेरियल रिसोर्सेस था, इतना ज्यादा था कि मतलब पूरा अर्थ उसी का, हेवनली प्लैनेट्स उसी के, नीचे के जितने प्लैनेट सब उसी का, सब कुछ उसी का। मतलब उसने सन को भी कंट्रोल कर लिया, इवन गॉड ऑफ रेन इस इंद्रा, इनको भी कंट्रोल कर लिया सब। वो उसका जब इच्छा होता था तो वो सूर्य का ताप कम कर देता था, जब उसका इच्छा होता था बारिश करा देता था। अभी हमको बहुत ज्यादा बिल्कुल ये हाइपोथेटिकल लग रहा होगा, बिल्कुल मिस्ट्री है, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कोई हैप्पीनेस नहीं थी, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान था because of the lack of true consciousness. He thinks that I am the only enjoyer, I will become only enjoyer, everybody should worship me, I should become the center, and that's why he is not happy. So when we try to apply all these real problems in our life, so ultimately it's going to affect our ecosystem also. Our environment will surely going to be green. So these are the result. By applying all these principles, our arrogance will convert into humility, greed will become generosity, hatred will turn into love, anxiety into contentment, and anger into compassion. So we have to live our life like a candle, not like ice cream. So both the things melts with respect to time, but in one ice cream there is something called as selfish enjoyment, and in candle there is no selfish enjoyment. It burns and melts and creates light for other individuals, other living entities. So our life should be like this only. We should not exploit and exploit and exploit. I'm repeating the same thing again and again and again, because it's the only problem which we are facing. Just our lack of moral tendency, our lack of spirituality, because of which we are exploiting, and we are becoming consumers, only consuming, and no contribution to the environment. We are just consuming of natural resources, and we are just producing waste and waste to the whole environment. So relating to this, हमारे इस्कॉन में ऐसा किया गया है कि कुछ इको विलेजेस बनाए गए हैं, जैसे कि गोवर्धन इको विलेज है, ये मुंबई से 100 किलोमीटर पर दूर है, जो है बाडा नाम से. So this Govardhan Eco Village has won many prizes from United Nations also, and in India also various prizes it had won. So उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पीपीटी में उसके बारे में. So 120 एकर्स का वो लैंड है, और उन्होंने पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि कुछ भी जो हम रिसोर्सेस लेंगे उसके बदले हम कुछ भी वेस्ट इन्वायरमेंट को नहीं देने वाले हैं. पूरा उनका प्रॉपर सिस्टम है, फुली वो गाय रखे हुए हैं, दे हैव बायोगैस प्लांट, दे to around 45 vegetables they grow, too many crops they grow, irrigation through borewell, and water, and no waste is provided to the environment. Whatever the waste is produced by them in the form of water, it is properly channelized and used for the irrigation purposes. So this is a proper model which is made by them. And apart from this, there are various other villages which are made like this, like Talasari is there, also there. It is also near to Mumbai, and various others are there which are in foreign countries. So these are some of the things. Okay, thank you so much. So if there are any questions, I need to so. And apart from this, I just want to mention on 20th of June 2021, we are having a seminar by Dr. Vivek Indra. He is a motivational speaker and founder of badabusiness.com. So yeah, I think he's sharing. So 20th June को ये होगा. टॉपिक है बिजनेस योगा फ्रॉम भगवद गीता. सो ये मेनली यूज के लिए है. 15 to 35 पेज ग्रुप्स में इसको अटेंड कर सकते हैं. इसका जो लिंक है रजिस्टर करने के लिए वो आप चैट में भी प्रोवाइड करेंगे.
Will you please provide in chat? Okay, thank you so much for inviting me. I would like to thank SAGE University who had given me this opportunity to be here and speak a few words. Okay, so if whether there are any questions, Thank you so much, sir. If anyone has any questions, please raise your hand or drop it out on the chat box. The host will ask the question. No questions, anyone? Yes, Asti. Good afternoon, ma'am. Okay, so now I would like to call our SAC Vice President, Mr. Akshat Vyas, sir, for a vote of thanks. Thank you so much, Asti. And first of all, thank you very much, dear Bhaskar sir, for being here with us. मुझे आपको सुनकर रामधारी सिंह दिनकर याद आ गए। वह कहते हैं कि मूढ़ मनुज यह भी न जानता तू ही स्वयं प्रकृति है, खुद अपने से आप भागकर कहाँ त्राण पाएगा। तो वर्तमान में मानव समाज प्रकृति से जुड़े हुए अपने अस्तित्व को स्वीकारने में कहीं ना कहीं कमी महसूस करता है, और आपकी उपस्थिति उस भास्कर की तरह थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जो मानवता को प्रकृति से जुड़े रहने के लिए नवीन राह दिखाने में पूर्णतः सक्षम है। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच सर. We are really honored that we had your gracious presence. Now I would like to thank respected Chancellor sir, Engineer Sanjeev Agarwal sir, for always supporting us. Respected ED ma'am, Ms. Sakshi Agarwal and Shivani Agarwal, for always giving opportunities to the students. I would like to draw a big thanks to the United Nations Environment Program for letting us hear to a great speaker. I would also like to thank Institute of Agriculture Sciences and Student Activity Cell team for their amazing coordination. Our teachers are here. I would like to thank all the respected teachers for being here and all the students. Last but not the least, I would like to thank Mr. Nirbhay Chauhan and Ms. Asti Chandresa for having a great coordination. Thank you very much, sir. The Student Activity Cell परिवार Agriculture Sciences का परिवार और सेज यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आप हमारे साथ थे, और इतने अच्छे वक्तव्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू एवरीवन. Thank you so much, everyone. I think there is one question, one hand raised. Yeah, it's from Yash. Yes, please. Yes, sir. Please unmute Yash. Hello, sir. This is Yash this side. I had a question. Yeah. Could you please tell us how we can connect to this program by the UN? The link is provided here in chat box, and actually this is not the program of UN, it's by Spawn. So that's I want to clear here. So link शायद भेज दिया ना? Yeah, Yes, it's there. the link is provided. Yeah. Yeah, you can see in the chat box. Okay, thank you, sir. Any other questions? I think there is no. Okay. So once again, I thank SAGE University and all the teachers and the Vice Chancellor for inviting me for this session. Okay. If I will provided opportunity again, I will be there. Thank you so much. Thank you so much, sir. Requesting admin to not close the meeting until and unless everyone just
Hasti, thank you very much for this coordination. मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली इस कॉन्टिन्यू में मतलब जैसे अभी की जो लिंक है सभी उसका रजिस्टर कर पाए इसलिए हम कुछ सर एक्चुअली आपकी आवाज ओके सर सॉरी आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली. No, sir. Actually, your voice is not proper.